calculating enthalpy changes. All right. Now, before we get into the calculations, right, we're going to try to define the term bond energy. Does anyone know what the word bond energy means? Bond energy is defined as the energy needed to break a bond. Okay. And I'm going to write this in brackets. Specifically, जब हम bond energy की बात करते हैं, we are talking about covalent bonds. Okay. हम लोग जितने भी बॉन्ड एनर्जी वाले क्वेश्चंस करेंगे वी गोना टॉक अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, आयोनिक का थोड़ा सा डिफरेंट होता है. आयोनिक का थोड़ा सा डिफरेंट होता है. But for the purposes of our course, okay, we'll be talking about covalent bonds only for O levels. Okay. But if they ask you for the definition, you don't have to mention covalent. You can just say energy needed to break a bond. Okay, that's why I've written covalent in brackets. All right. Or we can also define it alternatively. We can say it is the energy released. Okay, it is the energy released when a bond forms. Okay. And again, specifically, we're talking about covalent bonds. Okay. When a covalent bond forms. Okay. The energy released when a covalent bond forms. Okay. Or you can just say the energy released when a bond forms. But again, we're going to be talking specifically about covalent bonds. All right. So based on this, we can say that bond breaking, if I wanted to break a bond, so if I wanted to break a bond, I wanted to separate atoms, right? So मिसाल देता हूँ, let's say हमारे पास एक हाइड्रोजन की molecule है, right? हमारे पास यहाँ पर क्या है? We have basically two atoms of hydrogen that are covalently bonded, right? We have the shared electrons and we have nuclei, right? और इसमें क्या होता है, if you guys remember, मैंने आप लोगों को समझाया था पहले कि इसमें क्या होता है, बेसिकली आपका न्यूक्लियस इज बीइंग अट्रैक्टेड, आपके इलेक्ट्रॉन्स जो बीच में है they're negatively charged, right? And they're attracting दोनों दोनों एटम्स के न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींच रहे हैं. The shared electrons, are pulling the two nuclei together, right? So if I want to separate these atoms, would that release energy or would I need to provide energy? I'd have to provide energy, right? Because again, ये क्या हो रहा है, in atoms में the nucleus is being attracted by the shared electrons, right? So in order to separate them, I have to provide some energy, which means that if you have to provide energy, what's providing energy means that अगर आपको bond को break करना है, दोनों atoms को अलग करना है, you have to provide energy. That means that it's endothermic. Endothermic क्या होता है? When energy is taken in, right? You need to provide energy so that energy will be taken in to break the bond. Okay, so we can say that bond breaking is endothermic. Okay, we can say bond breaking is endothermic. Bond breaking is endothermic, right? In other words, energy is required or energy needs to be provided to break a bond, right? The energy is required to break a bond. All right. And then obviously that would mean that bond making is the opposite, right? So for example, अगर किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे 500 जूल्स एनर्जी चाहिए, तो अगर कोई बॉन्ड बनेगा उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी, राइट? अगर किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, वो बॉन्ड बनते हुए उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी, राइट? सो बॉन्ड मेकिंग is basically the reverse, right, of bond breaking. इसमें the atoms are coming together and forming an attraction और उससे energy release होती है. So bond making is exothermic. Okay. Bond making is exothermic. In other words, energy is released when a bond forms. The energy is released when a bond forms. Now, let's look at an example of how to calculate enthalpy changes. Okay. Now I'm going to first do the example. मैं आप लोगों को फॉर्मूला नहीं सिखाऊंगा, पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि हो क्या रहा है. सही है. So
Let's say I have a reaction, okay? Hydrogen gas reacts with chlorine gas to form hydrogen chloride gas, HCl. This is 2HCl. Okay. एंड मैं आपको यहाँ पर बॉन्ड और उसकी एनर्जी भी दे देता हूँ, सही है? आपको दी हुई है किलो जूल्स पर मोल में, सही है? तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है, okay, इसकी एनर्जी इज 436 किलो जूल्स पर मोल। Cl बॉन्ड जो होता है इसकी एनर्जी इज 242 किलो जूल्स पर मोल। और HCl का जो बॉन्ड होता है इसकी एनर्जी इज 431 किलो जूल्स पर मोल। ओके, so I've given you some data, right? And I want you to calculate the enthalpy change of this reaction. I want you to think about what happens in a chemical reaction. So yeah, I don't want you to, as I said, अभी formula छोड़ो. Just think about what happens in a chemical reaction. Chemical reaction में होता क्या है? आपके हाइड्रोजन और क्लोरीन ने आपस में मिलकर HCl बनाना है, राइट? इन ऑर्डर टू डू दैट, पहले क्या होगा? सबसे पहले कौन से बॉन्ड्स, सबसे पहले बॉन्ड्स टूटेंगे या बॉन्ड्स बनेंगे शुरू में? आपके हाइड्रोजन के एटम्स आपस में बॉन्डेड है और क्लोरीन के एटम्स भी आपस में बॉन्डेड है। तो इनिशियली क्या होना पड़ेगा? इनिशियली क्या होना पड़ेगा? बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे या शुरू में बॉन्ड्स बनेंगे इनिशियली? आपके हाइड्रोजन और क्लोरीन ने आपस में बॉन्ड करना है, तो व्हाट डू यू हैव टू डू इनिशियली? इनिशियली आपको दोनों, आपके पास अगर दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, यू हैव टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स एंड यू हैव टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द टू क्लोरीन एटम्स, राइट? Okay, so if I start, let me draw a simple diagram, okay, to show you what's going to happen here. Okay, so if I start with a simple diagram here, right, I'm going to draw it on the right to show you guys what's happening, right? Let's say मेरे पास energy है, सही है? यहाँ पर I'm starting with a hydrogen hydrogen का bond, and I have a Cl bond, right? And initially क्या करना होगा? I want the hydrogen atoms and the chlorine atoms to combine. I want the hydrogen and the chlorine to combine, right? तो पहले मुझे हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और क्लोरीन का भी बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, right? Cl. So initially in order to provide energy, right? So again, bond energy क्या होती है? Is the energy needed to break the bond, right? Okay, this is the energy needed to break the bond, right? So हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एक बॉन्ड है मेरे पास, उसको तोड़ने के लिए मुझे कितनी एनर्जी चाहिए होगी? 436, right? I'll need 436 kilojoules of energy to break this bond. And I need 242 kilojoules to break this, right? Per mole. So plus 242, right? अब मैंने क्या कर लिया? मैंने bonds तोड़ दिए, right? So now I've broken the bonds. Okay. और मेरे क्या बन गए? हाइड्रोजन के एटम्स बन गए, मेरे हाइड्रोजन के एटम्स बन गए और क्लोरीन के एटम्स बन गए, right? Again, write this down, 2Cl, right? तो मेरे दो हाइड्रोजन के एटम बन, तो मैंने ये बॉन्ड तोड़ दिया, तो मेरे दो हाइड्रोजन के एटम बन गए और दो क्लोरीन के एटम बन गए। ओके, एक बार शुरू में बॉन्ड्स मैंने तोड़ दिए रिएक्टेंट्स के, राइट? मैंने रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स तोड़ दिए, H और Cl के एटम्स बन गए। अब H और Cl के एटम्स क्या करेंगे आपस में? बॉन्ड्स, दे गोइंग टू फॉर्म बॉन्ड्स, राइट? दे गोइंग टू मेक न्यू बॉन्ड्स, बिकॉज आपको HCl का बॉन्ड बनाना है, राइट? H और Cl आपस में बॉन्ड कर जाएंगे अब, और आपके कितने बॉन्ड बनेंगे? दो बनेंगे। दो हाइड्रोजन के एटम है, दो क्लोरीन के एटम है, एक H और एक Cl बॉन्ड बना लेगा, देन अनदर H and another Cl will make bonds, right? So we'll get two HCl bonds, right? And will that release energy or will that require energy? Bond making, is that exothermic या endothermic? जब bonds बनेंगे तो energy release होगी या required होगी bonds बनने के लिए? Bond making will release energy, right? Bond making is exothermic. तो with that arrow would be downwards, right? ये bonds आपके बन जाएंगे, right? ये आपके bonds बनेंगे
राइट, दो HCl बॉन्ड्स बन जाएंगे अब, और वो क्या है 431, so you'll end up with 2 HCl, right? और ये एरो क्या होगा, this arrow would be 2 times minus 431, right? 2 times minus 431. Why minus? Because जब बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक होता है, तो बॉन्ड्स जब बनेंगे तो एंथैल्पी चेंज क्या होगा, नेगेटिव होगा। व्हेन द बॉन्ड्स फॉर्म, राइट, एनर्जी इतनी रिलीज होगी 431, और आपके दो बॉन्ड्स बन रहे हैं ऐसे, तो इतनी आपकी एनर्जी कितनी रिलीज होगी, -431 किलो जूल will be the enthalpy change when the bonds form. It will be downwards because it's exothermic. Okay, so what's your overall enthalpy change? It's 436 plus 242, and then plus 2 times minus 431. Okay, so then we can say over here, हमारा जो, if you wanted to calculate the enthalpy change of a reaction, right? If you want to calculate the enthalpy change of a reaction, what are you simply doing? You're doing bond energy of reactants, okay, minus bond energy of products. Okay, you're doing bond energy of reactants minus the bond energy of the products. Okay, okay, bond energy of reactants minus the bond energy of the products. Okay, and again, why are you subtracting the bond energy of the products? Because जब bonds बनते हैं तो enthalpy change negative होता है, bonds बनते हैं तो it's exothermic, तो you have to, bond energy की value तो positive दी हुई है, लेकिन अगर ये एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब उसका जो एंथैल्पी चेंज है वो नेगेटिव होगा, तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट। तो यहाँ पर आपके रिएक्टेंट्स क्या थे, आपके पास यू हैड reactants में you had one HH bond, you had one Cl bond, right? और आप सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हो, आप दो जो है H और Cl के बॉन्ड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, राइट, बिकॉज आप दो HCl बॉन्ड बना रहे हो, तो वो प्रोडक्ट से बॉन्ड्स हो गए, राइट? So then this would be 242, sorry, it'll be 436 plus 242 minus 2 times 431, right? तो HCl की बॉन्ड एनर्जी 2 है, राइट, 2 times 431 को, लेकिन उसको माइनस कर लेंगे बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, so then your enthalpy change comes out to, therefore delta H is negative 184 kilojoules per mole. Okay, so the overall enthalpy change will be negative. Another way to say this is bond energy of reactants minus products भी कह सकते हैं, या we can also say bond energy of bonds broken, right? Reactants के आप bonds तोड़ते हो, and then minus the bond energy of the bonds formed, right? Because आपके products के जो bonds होते हैं वो बनते हैं, right? Bonds broken minus bonds formed. Okay, subtract the bonds formed because bond formation releases energy, so it's exothermic, so it's a negative. Okay, so that's why we have to subtract it. Okay. Okay, so we have NH3 giving us N2 plus H2. Okay, and then this would be 2NH3 gives you N2 plus 3H2. Okay, and I'm going to give you the bond energies. So again, let me say bond and the energy. N triple bond N. इसकी एनर्जी क्या होती है, 946. We have H bond H, which is 436, and we have the NH bond, which is
391. Okay. I want you guys to find the enthalpy change for this reaction. Okay. I want you guys to find the enthalpy change for this reaction. I'll give you guys 5 minutes to do it yourself and then I'll solve it with you. All right, so to find the enthalpy change, we have to do delta H, right? We know that the enthalpy change is bond energy of reactants minus the bond energy of the products, right? Now, in this case, आपके reactants में you have 2 NH3, right? Now, first of all, NH3 क्या होता है? Nitrogen is in group 5, right? Nitrogen is in group 5. Let me show you guys, let me show you the periodic table again, right? Nitrogen group 5. तो वो क्या करता है? It needs 3 more valence electrons, right? So it makes 3 single bonds. और hydrogen तो obviously सिर्फ एक ही bond बनाता है, right? So NH3 में, in NH3, what do we have? We have basically single bonds between the nitrogen and the hydrogens, right? We have 3 hydrogens in each ammonia molecule. So we have 1, 2, 3 single bonds between nitrogen and hydrogen, right? लेकिन यहाँ पर, right? So let me write this down. So bond energy of reactants यहाँ लिखता हूँ, right? Bond energy of reactants क्या होगी? आगे बस टोटल कितने NH bonds होंगे? एक अमोनिया में one ammonia has 3 NH bonds. One ammonia has 3 NH bonds. So 2 ammonias will have how many? There's 2 ammonias here, right? So how many NH bonds will we have? We'll have 6, right? One ammonia has 3, so we'll have 2 ammonias. That means 2 times 3, so 6 NH bonds, right? So reactants का क्या होगा? 6 times NH, right? Which is equal to 6 times 391. तो ये क्या आ रही है? 6 times 391 is 2346, right? 2346 kilojoules per mole. Okay. और फिर प्रोडक्ट्स का देखते हैं. प्रोडक्ट्स में you have N2, nitrogen again group 5 में होता है, it makes 3 bonds, right? Group 5 में होता है, it needs 3 electrons. So ये 3 bonds बना लेगा, तो it will make a triple bond with another nitrogen, right? So you have a triple bond between the 2 nitrogens, right? उसकी वैल्यू दी हुई है. We have 1 and 2, so that's 1 triple bond, right? एक N2 में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा. So that will be N triple bond N. और हाइड्रोजन के हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं. अब एक मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड होता है, एक मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड होता है, तो 3 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? We'll have 3 of these, right? We'll have 3 HH bonds. Okay, we'll have 3 HH bonds. So this will be 946 plus 3 times 436. Okay, 946 plus 3 times 436. So that gives you 2254. Right, 2254 kilojoules per mole. Right? So then our delta H is bond energy of reactants minus bond energy of products, right? So delta H would be 2346 minus 2254, right? Reactants minus products. So then this comes out to plus 92 kilojoules per mole. Okay, so that's your answer. So then you get plus 92, all right? And more simply, you can also see over here, I'll write this down, ऊपर ही सही है कि हमारा जो है एंडोथर्मिक रिएक्शंस में, राइट, सॉरी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में, ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में the bond energy of the products is greater than the bond energy of the reactants. Okay, bond energy of products is greater than the bond energy of the reactants, right? Because आपके जो products reactants के आप bonds तोड़ते हो और products के bonds बनने में energy ज़्यादा release होती है, यानी कि the products के bonds are stronger, right? So bond energy of the products is greater, so you're subtracting a bigger value, right? This value is bigger.
तो आपका आंसर क्या आता है? नेगेटिव आता है एक्सोथर्मिक के लिए. ओके, एंड फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, okay, for endothermic reactions, it's the opposite. Bond energy of reactants is greater than bond energy of products. Okay, bond energy of reactants is greater than bond energy of products. It's the opposite, right? This value is bigger. So, all right. Now let's do one last example. This one's a little more complicated. Okay. And then we're pretty much done with this chapter. Okay, so we have C2H5OH reacts with oxygen to form CO2 plus H2O. Okay, C2H5OH reacts with oxygen to form CO2 and H2O. And I'm going to give you the bond energy. So let me first balance this equation, right? So what we have is we have 2 CO2, we have 3 H2O, and then we have 3 O2. Okay, you should know how to balance this, right? We have 2 carbons, so that'll be 2 CO2. We have 5 plus 1, 6 hydrogens, so that will be 3 H2O. And then we have 2 times 2, which is 4 oxygens, and then 3 times 1, so that's 3. So 7 oxygens, यहाँ पर एक already है. So we need 6 more, that would be 3 O2. Okay, so that's the balanced equation for this reaction. All right, that's the balanced equation. And then I'll give you the bond and the energies. Bond and energy. Okay, in kilojoules per mole. All right. So the bond, we'll start with carbon-carbon. So let me write this down. Let me just get the values real quick. Yeah. So हमारे carbon-carbon bond. Again, these values, अगर आपको calculate करने का बोलेंगे, आपको values दी हुई होंगी. Okay, so you don't have to memorize any of these values, obviously. You don't have to memorize any of these values. These will be given to you. Carbon-carbon is 350. What do you call it? Oxygen bond is 496. Okay. The OH bond is what do you call it? OH bond is, let's see, what's the value for this? The value for this is 460. The carbon oxygen bond is single bond. Carbon oxygen single bond is 360. Okay. The carbon hydrogen bond, CH, is 410. Okay. Then you have C double bond O, which is 805. Okay. As I said, this is the most complicated probably the most complicated example that you can get. All right. Now, again, if you want to calculate the enthalpy change, right, that'll be bond energy of reactants minus bond energy of products. Okay. Now, first, let's draw out ethanol. Ethanol में क्या होता है? You have 2 carbons, right? C2H5OH. Now हमें पता है कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, right? हमें पता है कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है. So आपके पास क्या है? कार्बन with 1, 2, 3 hydrogens, right? It won't have a fourth hydrogen. It won't have a fourth hydrogen because then it won't be able to make more bonds, right? Or hydrogen भी सिर्फ एक बना सकता है, right? It won't have a hydrogen because then this hydrogen can't bond further, right? And carbon won't be able to make more bonds. Now this carbon will be bonded to another carbon, right? Okay, this carbon will be bonded to another carbon. That's H and then H. Okay, I'm drawing the structure for you. And then you have an oxygen and a hydrogen. Okay, we're going to study this later in organic chemistry as well. Okay, we're going to study this in organic chemistry as well. Okay, so इसमें आपके, if you start with the reactants, right? Reactants में आपके पास क्या है?
Well, you have ethanol. Ethanol में कार्बन कार्बन एक बॉन्ड है, right? Carbon, yeah, you just have one ethanol, right? एक ethanol में आपके पास एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है. That would be 350, right? Let me write this down. So कार्बन कार्बन बॉन्ड है, right? आपके पास पांच क्या है? You have 5 CH bonds, right? You have 5 CH bonds. So 5 times CH, right? You have 5 CH bonds. That's 5 times CH, right? And then you have one CO bond, right? Single bond, CO का single bond. Again, single bond होगा because oxygen obviously दो bonds बनाएगा, right? तो एक इसके कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ. तो you have one CO bond. Okay, you have one CO bond, and then you have one OH bond, right? That's ethanol, right? One OH bond. Okay. And then आपका दूसरे reactants क्या है? You have 3O2. तो यहाँ पर आपके O2 में किस तरह का बॉन्ड होगा, सिंगल या डबल? दो ऑक्सीजन आपस में will make a double bond, right? So you have 3 times the oxygen double bond, right? Because आपके यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन में एक डबल बॉन्ड होता है, right? All right. So reactants की क्या आ रही है bond energy? Carbon carbon is 350. You have 5 CH bonds, which is 5 times 410. Okay, then you have one CO bond, which is 360, right? Single bond O. You have one OH bond, which is 460. And then you have 3 oxygen bonds, which is 3 times 496. Okay. Okay. So then this comes out to what? 4708. Okay. Okay. So that's the bond energy of the reactants. Okay. Now bond energy of products. Bond energy of products. अब प्रोडक्ट्स में आपके पास दो कार्बन डाइऑक्साइड है. कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? रिमेंबर, कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, ऑक्सीजन 2 बनाते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन इज मेकिंग 4 bonds. डबल बॉन्ड विद वन ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड विद द अदर ऑक्सीजन. सो यू हैव 2 C डबल बॉन्ड O, राइट? यू हैव 2 डबल बॉन्ड. यू हैव 2 of these डबल बॉन्ड. तो दो कार्बन डाइऑक्साइड में कितने डबल बॉन्ड्स होंगे? एक कार्बन डाइऑक्साइड में दो डबल बॉन्ड्स हैं. एक कार्बन डाइऑक्साइड में दो डबल बॉन्ड्स है, राइट? तो दो कार्बन डाइऑक्साइड में 4 डबल बॉन्ड होंगे. ओके, so we have 4 times C double bond O, right? Because दो कार्बन डाइऑक्साइड है, एक कार्बन डाइऑक्साइड में दो बॉन्ड्स होंगे. ओके, एंड देन एक पानी में कितने OH बॉन्ड्स होते हैं? एक पानी में दो OH बॉन्ड्स होते हैं. तो तीन पानी में कितने होंगे? One water has 2 OH bonds. So 3 waters will have 6 OH bonds, right? Okay, so then this comes out to what? 4 times 805, right? That's the C double bond O. And then 6 times OH, which is 6 times 460. This comes out to 5,980. Okay. Then आपका delta H क्या होगा? Delta H is bond energy of reactants minus products. So 4708 minus 5980. 4708 minus 5980. So that is negative 1,272 kilojoules per mole. Okay, that's your answer. Negative 1,272 kilojoules per mole, right? And we would expect it to be negative. We would expect it to be negative because it's combustion. Combustion क्या होता है? When you burn something in oxygen, right? So this is exothermic. We know combustion is exothermic, so the enthalpy change should be negative.